Breaking news coming in. We are getting you the first images of AAP Neta's shooter. Yes, caught on camera. AAP Neta's shooter who was on the scooty. Bike-borne shooter who killed Lucky Oberoi. AAP leader Lucky Oberoi who was shot dead in Punjab. And that is the CCTV footage that is giving further leads to what happened. AAP Neta who was shot dead outside the Gurdwara in Jalandhar. Lucky Oberoi, who was shot dead in his car while he was outside the Gurdwara. And now the first pictures of the shooter that have emerged. CCTV footage of what really happened. And Lucky Oberoi, who died outside the Gurdwara while he was shot. First images of the AAP Neta shooter that have now emerged. So far, it is clear that he was on that scooty. That is how he was operating. And the pictures on your screens showing you what the image is of the shooter of Aam Aadmi Party Neta Lucky Oberoi, who died. He was attacked. He was in his car outside the Gurdwara. This happened in Jalandhar. And as the investigation continues, the first picture of the shooter that has been accessed by India Today. Remember Lucky Oberoi, who was fighting the municipal polls for the Aam Aadmi Party. Now, whether this was some sort of a political revenge or a political attack is something that is not clear at this point. But the picture of the shooter that has now come to light. Let me take this to Asim Bassi joining us on the broadcast with further details of whether the police has been able to narrow down who the shooter was and why Lucky Oberoi was targeted. Yes, well, this incident took place around between 7:50 to 8 a.m. in the morning when Lucky Oberoi, the Aam Aadmi Party local leader, Jalandhar, he was coming out of the Gurdwara after paying obeisances in Model Town. It's a posh area, it's a totally urban area with a lot of population surrounding, and suddenly, two shooters came on an Activa, and one of them shot multiple gunshots at Lucky Oberoi, which resulted in his death. Although the police started investigating, scanning the CCTV and the CCTV visual has come up where we can see two suspects moving on an Activa to execute the crime, or they are running after executing the crime. As far as the angle is concerned, you're not yet clear if it's a gangster angle or it's a personal enmity angle. So police is yet to make any statement on this. But this is definitely a glaring incident with Aam Aadmi Party in regime in Punjab and their own leaders being killed like this. The opposition has come all guns blazing, be it BJP, be it Shromi Akali Dal, be it Congress. They say that Punjab has become a total lawless state, and every now and then we see incidents happening. Last week, that a man was shot down by gangsters outside the RCP office in Mohali. So this is a story out from here that the Jalandhar police is working on this, but they had to crack the case of 12 people who shot down the Aam Aadmi Party leaders. Oh yes, absolutely. Asim Bassi there getting us details and those pictures that reveal what happened at the crime scene where Lucky Oberoi was targeted, and the first picture of the accused shooter that has emerged. This definitely, as investigation is underway, to what the motive behind this crime was. And do tell us more about the shooter. Meanwhile, Asim Bassi, I believe we may have lost that line with him, but Aam Aadmi Party's Lucky Oberoi was shot down by unknown assailants. While the investigation is underway, Lucky Oberoi, who was targeted outside a Gurdwara in Jalandhar's model town, cops have now initiated a probe into Lucky Oberoi's murder. Lucky was outside the Gurdwara when an assailant opened fire on him. He sustained 5 bullet injuries. He was rushed to a private hospital for treatment. Doctors at the hospital declared him dead. Some of the bullets struck him in the chest and head. India Today has now accessed the CCTV picture where 2 accused can be seen on a scooter. They opened fire at Aam Aadmi Party's Lucky Oberoi and fled the spot. Punjab leader of opposition Pratap Singh Bajwa has hit out at the Aam Aadmi Party government in Punjab, saying that law and order in Punjab had collapsed under Bhagwant Man's watch, and demanded an answer from Punjab Chief Minister over Lucky Oberoi's death. जालंधर में आज सुबह ही मॉडल टाउन गुरुद्वारा के बाहर
आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको गोलियां मार दी गई, अज्ञात हमलावरों द्वारा ये गोलियां मारी गई हैं। और देख सकते हैं इस समय तस्वीरें, जिस थार कार में वो यहाँ गुरुद्वारा माथा टेकने आए थे, उसके बाद माथा टेक कर पाठ करने के बाद जब वापस घर जाने लगे तो दो अज्ञात हमलावर जो एक्टिवा सवार थे वो आए और उनके द्वारा जो लगातार कई राउंड गोलियां फायर की गई और थार पे आप देख सकते हैं निशान लगा हुआ है। अभी पुलिस अधिकारी ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी जो मृत्यु हो चुकी है क्योंकि कई गोलियां उन पर लगी हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कौन अपराधी थे, कौन आरोपी थे। उसके बारे में पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि अभी ये मामला पुरानी रंजिश का है या नहीं, इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये सुबह 7:30 और 8 के बीच की घटना है और दो हमलावर जो आए थे स्कूटर पे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और हम लोग मौके पे हैं, आप देख रहे हो करके टोटल एफएसएल की टीम आ गई है और कार्रवाई जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पुरानी रंजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया? ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी पुरानी रंजिश थी या क्या था ये अभी तो हम लोग मौके पे है, वो सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीसीटीवी में कैद हुई है ये घटना? हाँ बिल्कुल जी, सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो देख के हम लोग उस पर आगे वर्क कर रहे हैं। कितने फायर हुए कुछ पता चला? किसे सवार होके आए सन वो लोग? एक्टिवा से बाइक पे सवार हो गए। कितने लोग सन? 2 लोग सन। कोई सीसीटीवी सामने आई? कर रहे सर, किस तरह जान बच गई? अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। गुरद्वारा सिंह उर्फ लक्की ओबराय जो ਜਿਹੜੇ श्री राम सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8:10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, BPM ਰਿਕਾਰਡੇਬਲ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਤੇ 9 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੋਡੀ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, BPM ਰਿਕਾਰਡੇਬਲ ਸੀ। ਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟੂਬੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, वेंटिलेटर ਤੇ ਪਾਇਆ, CPR ਕੀਤਾ ਹੈ, पर पेशेंट बच नहीं सके। देखिए, पंजाब कानून व्यवस्था के लिहाज से गैंगलैंड बन चुका है। आज गोलियां मार दी गई है जो बड़े दुख की बात है। देखिए, कानून नाम की कुछ चीज़ नहीं है, लोगों का विश्वास कानून से उठ चुका है। सरकार के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। ये तब होता है जब कमज़ोर प्रशासन हो। 2 मुख्यमंत्री चल रहे, केजरीवाल चला रहे हैं, एक भगवंत मान जी है, तो प्रशासन भी लाचार है।